मुझे बताओ तुम्हारा टॉपिक क्या है, तुम्हें तेरा एक्सटेम्परेरी टॉपिक क्या है? My extempore topic was digital banking and how it is impacting the financial sector. That's a good topic for a Yeah. banking institution. Like I was prepared for banking topics, CRR, RBI, and I was given the topic India as a sports powerhouse. Well, I was listening to interview experience of I am Shillong also. तो उसको एक लड़के को पूछा गया what is global warming, he was explaining it. Sun rises, rain आती है. मैं normally notes लेता हूँ when somebody gives an explanation. I was like shit. यहाँ पे I lost it. मतलब इतना बेसिक नहीं एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबल वार्मिंग सन आता है फिर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है etc. What is your topic? My topic was artificial intelligence. Oh AI, that's a good topic for sure. तेरा topic sports वाला है तो they can ask me anything under the Yeah. sun. Yes. Any tips Yeah. for that? Read as much as you can. तो बेसिकली कैसे होता है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर टॉपिक देता है. फॉर एग्जांपल व्हाट आई थिंक इज आई हैव डन यूपीएससी. Alright, hi everyone. Welcome to the homecoming session after SIBM, SMHRD and many of the IIMs. Today we have students, our own Cat King family students from NIBM Pune. Hi everyone. Hello, sir. Welcome. How does it feel? Yeah, it feels great to be on the other side of the camera. From watching your videos to being a part of one, it's been a great journey. बहुत ही बढ़िया. Great. How do you feel, man? It's great to be back here. So Were you attending those verbal Wednesdays, Mondays, long yes. Super. Great. How about you, Manasvi? It was great, sir. I used to give mocks and like frustrated in mocks, and now sitting here like giving an interview. like it was just a year ago that we were preparing Yeah. for Filmat. And now you And guys now we're here. Super. Now you guys are role models for many people. ये सर्वेश भाई तो बहुत बढ़िया. UPSC, CDSE, SSB दिया भाई ने 7 साल. इसकी interesting story है. बहुत बढ़िया. How does it feel, man? You're a It feels- fighter है तो fighter. यस, इट फील्स ग्रेट. अब वो करियर स्विच करके कहीं और स्विच करना, इट फील्स ग्रेट सर. Super. Great. A small introduction of your names quickly. What's your name? Manasvi. Manasvi. Good. Lakshya. Lakshya, are you first year? Yes, sir. Okay, great. सर्वेश. Sarvesh, first year. Shruti, first year. बहुत बढ़िया. आज मैं इनको टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आपका NIBM का इंटरव्यू है, this video is going to be really helpful. Beautiful campus for sure. We'll talk about campus life and this video is going to be helping for those people who are thinking to apply through CMAT as well. Yeah. CMAT के थ्रू बहुत कम अच्छे कॉलेज रह गए हैं, right? और उनमें से एक है NIBM. I would rank 1 or 2 best colleges CMAT के थ्रू. अगर आपका अच्छा परसेंटेज आ गया है, स्कोर अच्छा आ गया है, you guys can think of applying. लास्ट डेट कब है? 20th March. 20th March. Still they've got time to go. बहुत बढ़िया. Let's go यार. Manasvi, what was the CMAT percentile first of all? So it was around 97. 97. Yes. लक्ष्य तेरा कितना था? 99.26. ओहो, फाड़ दिया तूने तो. और कैट कितना था? 89. नाक कटाओ बस. बहुत बढ़िया. But a good job. I always say कैट अच्छा नहीं हो तो अगली टोपी पहनो. Yeah. And 99.26. Proud of you, man. Really amazing. Shruti, how about you? Sir, 89.89 percentile for CMAT. 89.89 पे होता है क्या NIBM? Sir, it doesn't depend entirely on your percentile. Like 25% is for your academic performance, 10% is for your oral communication test, 25% is about your personal interview, and 5% depends on your extracurricular activities and work experience. ये अप्लाई नहीं करते 89 वाले ही मुझे बोलते रहते हैं कि सर आप ऐसे ही बोलते हो NIBM में तो सब 99 वाले ही जाते हैं, तू 97 बैठी है. So that is a misconception amongst the students. Ki if you don't have a percentile above 99, you won't get into NIBM. Like we are also at 97 and 89 into NIBM and studying there But you only. were also thinking when you were applying, right? Yes, अभी कि बात मेरा है. कम है 97. तेरे तूने 89 पे किया किसे अप्लाई? मुझे तो एक क्वेश्चन. ये मेरी बात नहीं सुनते. मुझे बोलते सर आप क्यों बोल रहे हैं? सर अप्लाई नहीं करते हैं. तो सर मैंने पूरी वेबसाइट का रिसर्च किया था एंड देन आई फाउंड अबाउट दिस क्राइटेरिया अबाउट द एंटायर academic performance, extracurricular workings. So after considering all the factors, I decided to take a chance and apply because the safe score is 85 percentile. अच्छा. And above 85 percentile, you can apply. But you were 877. No work fresher. Yeah, I Okay. completed my graduation last year itself. No drop year. That's it. 877 and 89.89%. Is there a female quota as well? No, Gender diversity? no, sir. कुछ भी नहीं है. No points for बहुत gender बढ़िया. diversity. ग्रेट. सर्वेश 95 बैठा हुआ. 95.8 परसेंटाइल. बहुत ही बढ़िया यार. तो ये तो मेरे लिए भी बिग लर्निंग है. पहली बात है लो परसेंटाइल ऑल्सो. लो मतलब इतना भी लो नहीं. 95 परसेंटाइल बहुत होता है. But it's not a 99 percentile school as well. Right, sir. Of course, but there'll be many 99 percentile as well. Yeah. अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज वुड बी 97, 98. So 95, 93 भी है. मतलब if you have to take the average, you can take 94. It would be एवरेज ऑफ द स्कूल विल बी CMAT 94. नहीं ज्यादा होगा यार. हाँ सर. कुछ हैं हमारे बच्चे जो कि 89 कर रहे हैं जो कि एवरेज को इनसे भी नीचे है अच्छा. जो प्लेसमेंट्स लेके बैठे हैं.
who have अच्छा converted their summer internships. बहुत बढ़िया पर ऐसा नहीं तो तुम बोल रहे हो 85 इज सेफ स्कोर तुम्हें से एडकॉम वाला कौन है कहता है Sir, एडकॉम हम दोनों ही एडमिशन कमेटी बोल रहे हैं, पकड़ेंगे आके हाँ अगर तुम्हें अप्लाई करना तो देख लो भाई So तो for general category, it is above 95. You take a Achha. safe score. But हाँ. if you are a reserved category student, you take 10 points below. That is 85. You consider you can get into an That's IBM. a- that's a good That depends clarification. upon your interview, your communication skills, and your profile. बढ़िया बढ़िया So Because more than 60% of the probability you have got in your hands. It's not the marks, it's Yeah. your personal interview, it's the oral communication test. कॉल तो आएगी कि नहीं वो क्वेश्चन है ना कॉल कितनी पे आएगी तो कॉल मतलब 85 के ऊपर रिजर्व कैटेगरी और Yeah, जनरल है तो 95 के ऊपर वेट कर सकते हो पर कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हम हाँ. Yes. मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ पर कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे तुम्हारी कॉल आ सकती है बट 99 वाले बच्चे बैठे हो तुम्हारे सामने बैठा 99 बहुत ही बढ़िया यार गुड सो लेट्स गो इनटू डिटेल सो एनआईबीएम पुणे चलो सपोज कर लोगों ने अप्लाई कर दिया ठीक है अभी विल टॉक अबाउट कैंपस लाइफ आल्सो बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यूज यू वर टेलिंग अस द रैंकिंग सो क्या है मतलब सॉरी बाइफर्केशन सो कैट का वेटेज कितना है 35%. 35% only Yeah. CAT CMAT of the world Any बहुत CAT, बढ़िया। CMAT, ZAT, and GMAT and GRE. GMAT GRE CAT Yeah. that CMAT बहुत Yeah. बढ़िया गुड एंड उसके बाद 35% बाकी क्या है 25% is for academic performances. बढ़िया तो 10 12 में नंबर एकेडमिक परफॉर्मेंस ओके गुड Yeah. And then 5% is for your extracurricular and work-ex. ओके 25% for your personal interview, गुड and another 10% for your OCPI. व्हाट इज OCPI OCPI is 10. This 10% is basically allotted for OC only. That is oral communication text, Okay. and that is extempore. Like Acha. they give you a topic and a time of 2 minutes to think about that, and then you have to speak about that topic for 1 minute. इस बार के टॉपिक्स तो तुम्हें पता ही होंगे तुम एडमिशन सर बहुत ही जनरल टॉपिक्स होते हैं. अपने बताओ तुम्हारा टॉपिक याद है तुम्हें तेरा एक्सटेम्परी टॉपिक क्या है my extempore topic was digital banking and how it is impacting the financial sector. That's a good topic for a Yeah. banking institution Like I was prepared for banking topic, CRR, RBI, and I was given the topic India as a sports powerhouse. what So you have to get these extempo like skills to excel the oral 2 मिनट का communication टाइम test. देंगे सोचने के लिए 2 Yeah, to yeah. 3 minutes. 2 Yes, 3 yes. मिनट सोचना एंड बोलना दोनों Yes, yes. No. Okay. They will give you 2 minutes to think and then 1 minute to speak Okay. More on than that 1 topic. minute. More than depends. Understood. Yes. सर बहुत बच्चों वाला टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग. Global warming. ग्लोबल वार्मिंग दे दिया. ये बातें कल करते. आई वाज लिसनिंग टू इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ आई एम शिलोंग आल्सो तो उसको एक लड़के को पूछा गया व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग ही वाज एक्सप्लेनिंग इट सन राइजेस एंड आती है मैं नॉर्मली नोट्स लेता हूं व्हेन समबडी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन आई वाज लाइक शट यहाँ पे आई लॉस्ट इट मतलब इतना बेसिक नहीं एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या? सन आता है फिर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाट इज योर टॉपिक My topic was artificial intelligence. Oh, AI, that's a good topic for sure. Yeah. Tera topic sports wala hai. So they can ask me anything under the Yeah. sun. Yes. Any tips Yeah. for that? So Read as much as you can. तो बेसिकली कैसे होता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर टॉपिक देता है. फॉर एग्जांपल व्हाट आई थिंक इज आई हैव डन यूपीएससी हाँ, वो का कहाँ प्रिपरेशन. sports लगता है उसको sports में लग रहा है वो सो Sir. क्या है वो देख लो देख चेहरा उसको उसके रेज्यूमे में साइकिलिंग वाइकिलिंग लिखा है सर. जिम्नाजियम लिखा है. ऐसा है क्या? तो उसको वहां से पूछा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. साइकिलिंग करता तू नहीं, gymnasium. जिम कर रहा हो सो तो वहां से पूछ लेते हैं. अच्छा लवली so they're going to check your profile and the topic is going to be on that Yes, yes. Yeah, it can be on that, and basically it is like how easily and like confidently you can speak. They don't judge you on the facts you put it; they judge you on the confidence that you give them. So that is what they and this happens pre-interview or post-interview during interview. during Interview, we will get 2 to 3 minutes to think about the topic and say, and then our PI will go on, or it can be vice versa also. First PI, yeah. okay great यार आपका awesome. इंट्रो चल रहा है इन बिटवीन दे लास्ट क्योंकि ओके सर्विस यू कैन टेल मी अबाउट दिस टॉपिक. Great. तो ये आरबीआई का स्कूल है यार मैं अज्यूम कर रहा हूँ जब इंटरव्यू चल रहा होगा हार्डकोर बैंकिंग पूछते होंगे एसआरआर सीएलआर हाउ वाज इट Sir, it's basically the questions they ask depends on your profile. Like if you are from an engineering background, so they'll ask you questions that are related to science and engineering. Like I was a commerce background, so they asked me questions related to commerce. So it depends on person to person It profile. was smooth or was it like a little bit crest and rough? Was it like ऊपर नीचे easy? तो होता ही होता है. थोड़ा ग्रिलिंग तो So रहता they है. test you, but you got to know the basic topics like what is the CRR scenario, like RBI has reduced the Repo rate repo and- rate by yeah. 25 basis points. So you have to know that
At least पहले you इसको should. repo rate तो बताओ At पहले least you should know the meaning of repo हाँ, rate. yeah. Because So it is expected that you are going in a banking. चलो college. लेट्स डू अ क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग और उनको चीट शीट बता दें कि कौन सी टर्म्स जो तुमने पढ़ी है, अब तुमने फर्स्ट ईयर खत्म कर लिया, राइट? Yes. कौन सी टर्म्स भाई चीट शीट है तुम्हारे लिए, इंटरव्यू के लिए ये सब पढ़ के लेना। और ये बच्चे ऑलरेडी 1 साल लगा चुके हैं, जो तुम लोगों का ड्रीम स्कूल है, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। हाँ भाई बताओ, लेट्स डू अ रैपिड फायर। So basically, you need to know about the rates, that is repo rate, reverse repo rate, सारे CRR, बोल देंगे and ना, हाँ, SLR. ठीक है, good। तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या Reverse होता है, repo बहुत rate, बढ़िया, SLS, SLR and SLR एंड CRR, बहुत yes, sir. बढ़िया, ठीक है, गुड। फुल फॉर्म बताओ थोड़ी सी यार। Statutory liquidity ratio, बहुत बढ़िया। cash reserve ratio, repurchase agreement rate, ओके, Yeah. and Banking marginal rate. standing facility MSF. मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। Hmm. और हाँ सर बेसिक्स आप न्यूज़ पे कर सकते हो। लेट्स से मेरे को ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे डॉलर ऑल टाइम लो गया था, तो वो रीजन पूछे थे। इवन इफ यू रीड नॉर्मल न्यूज़पेपर यू विल कम टू नो व्हाई इट इज हैपनिंग। रुपी कब अप्रिशिएट करता है, हाँ, रुपी कब कब डिप्रिशिएट depreciate करता है, basic और difference. हाउ इज गोइंग टू इफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी? Right. Yeah. इज एप्रिसिएशन ऑफ Yeah. डॉलर बेटर और depreciation of dollar better for Indian economy? How RBI is taking steps to you know What is RBI doing, Yeah. etc. And Great. with these policy making rates, their impact on the economy, like Yeah. how it's gonna inject the liquidity or how it's gonna affect the inflation. What is basically liquidity that. first of all? Liquidity, and then सर ये yeah. टर्म्स बस भारी है, एक बार आपने पढ़ लिया इट इज It's एक very ही easy. बात है ना, वो पैसा इधर से इधर जाने को रेपो रेट बोल देते हैं, और इधर से इधर लेने को रिवर्स Yeah, रेपो रेट बोलते हैं। One more important thing is the discussion on union budget. Oh, lovely. Right now, budget is अगर तुमने बजट नहीं पढ़ा है तो भाई किसी और का इंटरव्यू तो क्रैक हो जाएगा, इनका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, राइट? एंड ऑफ द डे व्हाट इज बजट? बजट इज पैसा, पैसा Yeah. मींस बैंकिंग, बैंकिंग मींस NIBM, of course, right? Because they're controlled by, not controlled, but you are Monitored by RBI. अच्छा, sorry, off topic. So RBI की chairman तुम्हारे वो करने आते हैं? Convocation Convocation ceremony. ceremony. Yeah, governor of RBI. Governor, yeah. Yes, sir. This is every year, right? Every year. Yes. Wow, this is so cool. Governor, RBI executive, MD and C of all the top public banks. sector banks, private स्टेट बैंक sector के आते हैं, banks, स्टेट all of them. Deputy governor. पंजाब नेशनल बैंक के वो भी आते हैं, Wow. so they are also on a board. So I'm getting a question. Sorry, it's going to be a little bit crude, but is it सरकारी vibe नहीं है थोड़ा? No, sir. सरकारी पैसा है बट सरकारी वाइब नहीं है। क्या बात है लड़का, ये बढ़िया। ये पहले तो CDS UPSC कर रहा था, वहाँ सरकार ने नहीं लिया, तो यहाँ पे आके बोला सरकार, यहाँ सरकारी वाइब तो नहीं। I've been to the campus, right? But still, do you get private companies? Do you get fintech? आजकल तो Yes. देखो भाई, I'll be honest, banking is passé now, ठीक है? When you say banking is passé, HDFC banks of the world, bank as a retail banking is passé. Now it's all fintech. Yeah. And I was going through the company. You are getting hardcore banking. International banks are also coming in. Foreign Yeah. banks are also Yeah, coming yeah. on campus. But apart from the Yes Bank, HSBC, ENY KPMG क्या कर रहा है यहाँ पे आके? बैंक अमेरिका समझ रहा है? BNY, Bank of New York. BNY. ENY भी है ना? Ernst and Young also Right. comes. Ernst and Young, yeah? Yeah, EY. sir. Yeah, So they EY. come for consultancy roles. Consultancy roles. Okay. Yeah. Consulting is also open. in Yes, India. Yes. sir. तो मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ, आके इंटरव्यू तो हम बोल देंगे वेरी पैशनेट अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री, दिस इज द यू नो एंड आई रियली लव द स्कूल ब्ला ब्ला ब्ला, बट लेटर ऑन मुझे कुछ रोल्स कुछ और करने, इज इट पॉसिबल? यस सर, मतलब इफ यू आर इनटू मार्केटिंग तो फिर इट इज एडवाइजेबल कि मत आओ, बिकॉज़ Marketing and sales वी आर नॉट मत इनटू आओ. मार्केटिंग एंड Yeah. सेल्स, वी आर अच्छा. प्योर फाइनेंस पीपल। Basically, सारे core finance roles हैं, Right. like credit analyst, risk analysis, and apart from that, consultancy and product Project management, manager, project like manager, that. these all प्रोडक्ट roles we मैनेजर have. इन टोटल कंपनीज लाइक Right now, L&T came with product Product management. Auronova, Auronova, and Money yeah. Box. Even Bajaj Money Finance box, had yeah. a बट फिनटेक का ये होगा हाँ, ना, yes, sir. product Yeah. बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, फाइनेंस Finance का का बनाना है. बिफोर जॉइनिंग अ बिजनेस स्कूल, सी द लेगेसी ऑफ द कॉलेज, राइट? दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। सी बच्चे कहाँ प्लेस हुए हैं, टॉक टू एलुमनाई, talk to alumni beyond admissions committee. AdCom guys are like, stay away from them. Yeah, नहीं वो यार वो पैशनेट होते हैं AdCom वाले, है ना? यहाँ बैठे हैं AdCom वाले, ये पैशनेट होते हैं, इनको अपने स्कूल के बारे में इतना पता होता है जितना फैकल्टी को भी नहीं याद होता कि हमारा स्कूल ये है, and then they brand it in a very good way. ठीक है, nevertheless, but it's always good to have a honest opinion, right? I always tell them, B school stays on your shoulders for rest of your life. Right? Yeah, and you do that's MBA only once. Yes, sir. तो Yeah. सारा सुन के वीडियो करके डिसीजन लेके लीडरशिप देके रे साहब इनके पैनल पे हैं, who's the head of the institution, Director. Director. director of the Yeah. institution, and dean sir is Arindam sir. Arindam sir. उनके प्रोफाइल तो देखो पहले बैठ के and ask yourself whether these guys will do anything wrong. So Ray साहब was 13 years in Partner. he was in World Bank. He was in World Yeah. Bank. Yeah. I am Calcutta crisis. professor. Sorry? I am Calcutta professor. 13 years he has taught in IIM Calcutta. These Yeah. guys cannot do something wrong. Yeah.
और कॉन्वोकेशन पे तो आरबीआई के गवर्नर तो आने वाले हैं Yeah. तो वो भी एक बार चेक कर लिया करो एंड दीस थिंग्स आर वेरी शॉर्ट पीपल सी नंबर प्लेसमेंट सेल देखा भाई कितना नंबर है कितना पैकेज है इसमें 20 लाख है इसमें एवरेज 15 है चलो 20 वाले पे चले जाते हैं ऑफ कोर्स दोस नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट द डेल्टा ऑफ 5 lakhs after taxes or something is going to be very little. It's not even going to be 20,000 rupees per month. You know? तो अगर आप 15 लाख की कॉलेज तुम्हें लग रहा है कि तुम जाना चाहते हो तुम्हें बढ़िया लग रहा है एलुमनाई अच्छा बोल रहा है स्टूडेंट्स अच्छे बोल रहे हैं बियॉन्ड एडकॉम तो think about it, yeah? Think about it and then take a decision. Great. All right, boys and girls, thank you for joining in. Boys and girls, वो क्या बोलते हैं? Like, share, क्या बोलना? Like, share, subscribe. Hope my channel was helpful in your journey when you were preparing. Yeah, you're a part of the Cat King family as well. Hope it was helpful in the mocks and everything. Yeah, so the 96-97% cat भी है. Brilliant, yeah, brilliant. I'm so proud. Thank you so much for coming. Boys and girls, do it to the like button for sure. और मुझे कमेंट करके बताइए, have you guys applied to NIBM? या अप्लाई करने वाले हो? या NIBM के बारे में कुछ क्वेश्चन है? या जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं और ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए. एंड कैन आई गिव योर लिंक्डइन आईडीज टू देम? दे कैन रीच आउट टू यू गाइस. बहुत ही बढ़िया. तो मुझे तंग मत करिएगा, कमेंट सेक्शन में करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी क्वेश्चन आपके बारे में पूछे. इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल. थैंक यू सो मच जॉइनिंग बॉयज. यू गाइस आर अमेजिंग. हिट द लाइक बटन और शेयर कर दो इस वीडियो को. 20th मार्च इज द डेडलाइन फॉर देम फॉर द CMAT एस्पिरेंट्स. जिन लोगों ने कैट वेट के थ्रू भी अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया. तो ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स एंड टेक केयर. सी यू लेटर. बाय बाय.